حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن. Narrated Abu Huraira, the Prophet Muhammad said, the sign of a hypocrite are three. Whenever he speaks, he tells a lie. 2. Whenever he promises, he always breaks his promise. 3. If you trust him, he proves to be a dishonest. If you keep something as a trust with him, he will not return. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें तीन है। नंबर 1, जब बात करेगा झूठ बोलेगा। नंबर 2, जब वादा करेगा उसकी खिलाफ वर्जी करेगा। नंबर 3, जब उसको अमीन बनाया जाए तो حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. Narrated Abdullah bin Amir, the Prophet said, whoever has the following 4 characteristics will be a pure hypocrite, and whoever has one of the following 4 characteristics will have one characteristic of hypocrisy unless and until he gives it up. 1. Whenever he is entrusted, he betrays. 2. Whenever he speaks, he tells a lie. 3. Whenever he makes a covenant, he proves treacherous. 4. Whenever he quarrels, he behaves in a very imprudent. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिसमें हो तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत भी हो तो वो भी निफाक में ही है जब तक उसे ना छोड़ दे। नंबर 1, जब उसे आमीन बनाया जाए तो वो अमानत में ख़यानत करेगा। नंबर 2, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा। नंबर 3, और जब किसी से ओहद करेगा तो उसे पूरा नहीं करेगा। नंबर 4, जब किसी से लड़ेगा तो गालियों पर उतर आएगा।